Hi and welcome to Success Stories with Surabhi. I have a very special guest today. So here's Mr. Praveen Rao. Let me give you a quick introduction to this series. This series is for mango people and by mango people. यानी आम आदमी की कहानी है कि एक आम आदमी कैसे सक्सेस के इस लैडर पे पहुंचा. ठीक है. So हम शुरू करते हैं. So hi Praveen, welcome to the show. Thank you. Thanks, Surbi, for having me today. And good afternoon, good evening to everybody who's watching this. Yeah, great. So Praveen, why don't you share something about yourself? Okay. So, Surbi, जैसे आपने mango people and mango situations की बात की है, I totally relate to a mango situation or a common man situation because I come from a very humble background, born in Bilaspur, Chhattisgarh. Spent earlier first 12 years of my life in Bilaspur, moved to Indore with my father. Most of my education happened in Indore. As a matter of fact, my entire education happened in Indore, and my first job was also in Bhopal. So, but yes, over the last 20 years, I've been in the profession of marketing, data, digital marketing, analytics, etc. And yes, the last 20 years has been fantastic and fabulous, where I have worked with variety of organizations, अलग-अलग लोगों के साथ काम करने को मिला, अलग-अलग industries में काम करने को मिला, and I'm fortunate that I get to interact with a lot of wonderful people around. Absolutely. So, what are you currently doing, Praveen, and what was your last organization where you have worked as well? So currently I am working with DDB Mudra Group's venture, which is called the Tech Company. We started this venture some 1.5 years back. ये venture बड़ा simple सा vision रखता है that जो भी offline चीजें होती है हमारे country में, क्या उसको हम online channels तक पहुंचा सकते हैं in a very seamless fashion. So and owing to this pandemic times, a lot of organizations have realized the value that why having a digital presence is important, and we are happy to state that we are able to help a lot of organizations in that space. Prior to this, I have spent roughly 10 years with an organization called Arvato, which is now Majorel, and that was a fantastic journey in itself because India was changing, and we were contributing to some of those changes from a CRM perspective, doing some very interesting programs in the market. So yeah, that's been about me. Over last 10 to 15 years. Prior to that, of course, I have had spent with time with companies like Dun & Bradstreet, Microsoft, Times of India Group. So the genesis started with the Times of India Group and journey continued. Journey continued. Very, very, very nice. So in your corporate stint, Praveen, ऐसी कौन सी 5 चीजें आपने की जैसे आपने 20 years, 2 decade of experience, wow. And उन particular time में आपने ऐसी कौन सी 5 चीजें की जो आप आज हैं जिसके लिए आप कहते हैं those were the right decisions I have taken. So what are those? So to be very honest, जब आप वो करते हो चीजें आप सोचते नहीं हो कि वो मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बट आपका एक जजमेंट होता है, गट फील होती है जिसके बेसिस पे आप कुछ चीजें करते हो. तो अगर मैं इसी 5 चीजों को रिकॉल करूँ तो एक डेफिनेटली ये चीज कहूंगा कि दैट आई ऑलवेज गॉट फैंटास्टिक मैनेजर्स एंड मेंटर्स. वो बहुत मैटर करते हैं आपकी लाइफ में कि आपको कैसा गाइडेंस, आपका रूट्स कैसे रखे जाते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के. सो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है मेरी लाइफ में थ्रू आउट, जहाँ पे मुझे कॉलीग्स, मैनेजर्स बड़े अच्छे मिले जिन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया, सही गाइडेंस दिया, सही टाइम पे कुछ अच्छी एडवाइसेस दी. सो और आपने वो एडवाइसेस ली भी? एडवाइसेस ली भी, कई बार मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ली, कई बार शायद डिससैटिस्फाइड होके ली, बट व्हेन आई लुक बैक आई डोंट रिग्रेट, बिकॉज शायद अगर मैं उस वक्त अपने थॉट प्रोसेस से जाता और चीजें करता तो चीजें गलत हो चुकी होती या शायद एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता. तो एक वो फैक्टर है. द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट when there is always a choice that आप कुछ भी करने जा रहे हो, there is a short term benefit and there is a long term benefit, and you often come to that juncture where you have to decide that should I do something which is going to benefit me and my organization in near term, or should I let go of that and invest in something which could be more long term, which is in the interest of my employees, my team, my customers. And I think that's one of the guiding principles of my life, that always try and think जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ क्या वो उसका इम्प्लीकेशन अभी है या उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होगा. एंड आई थिंक ये जब थॉट प्रोसेस के साथ जब मैं कोई डिसीजन लिया हूँ करियर वाइज, प्रोजेक्ट्स को लेकर के, टीम को लेकर के, वो हमेशा मुझे
पॉजिटिव फैक्टर ही रहा है उसका. Forecasting थर्ड, is, yeah. फोरकास्टिंग, बट यस, मेकिंग अ चॉइस कि किसी चीज का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म True. इम्प्लीकेशन क्या है, एंड नॉट गेटिंग शॉर्ट मायोपिक अबाउट समथिंग इज ऑलवेज हेल्पफुल. Yeah, yeah, And absolutely. the third important aspect is that I always try to focus around the fact that how will my customer benefit from something, how True. will my organization benefit from something, and how will my people benefit from something. Because Wow. जब आप कुछ शुरू करते हो, कोई एक्टिविटीज प्लान करते हो, आप ये सोच के नहीं करते हो कि चलो कर लेते, जाने देते, क्या होगा मुझे भी नहीं पता. सो मेरे लिए कभी भी कोई जॉब असाइनमेंट्स ये नहीं रहा है कि मुझे 2 साल करना है, एक प्रमोशन लेना है, आगे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है. Wow. आई नेवर प्लान्ड इट लाइक दैट. Wow. It's just that my passion drove me to do something, be it in the field of analytics, data marketing, data-driven Wow. marketing, or whatever fields I have been into in my last 20 years. Wow. So, thinking from a perspective that क्या ये मेरे कस्टमर के लिए फायदेमंद है, वो डिसीजन मेरे को कभी नुकसान नहीं किया है. आज भी कई मेरे कस्टमर्स ऐसे हैं, मेरे क्लाइंट्स ऐसे जो मेरे साथ शायद पिछले 15 या 20 साल से जुड़े हुए हैं. मेरी Wow. ऑर्गेनाइजेशंस बदली है, प्रोजेक्ट्स बदले हैं, बट दे हैव रिमेन्ड विथ मी. They have remained So with you. that trust, and if I were to call that, never break a trust. Yeah. And अगर आप ट्रस्ट गलती से किसी का ब्रेक भी करते हो, तो Right. बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, गो एडमिट इट दैट यहाँ से मेरे से गलती हो गई है. शायद उसका इम्प्लीकेशन ये हो सकता है दैट somebody would leave you, somebody would say that मुझे आपसे काम नहीं करना है, या मेरे को आपको अगला प्रमोशन नहीं देना है, आपका हाइक नहीं मिलेगा, जो भी है. लेकिन somewhere you have sowed the seed of trust with that person by admitting something. And fourth thing is, एक बार गलती करके वो गलती दोहराना is a big mistake. Right. So yes, we all commit mistakes, Yeah. but अगर वो mistakes अगर आपने सीखा नहीं, so somewhere you are not progressing in life. Wow. And Wow. last but not the least, you may find it funny, but I never planned for success. Mm-hmm. So गोल हम सबका होता है प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, कि आपका अप्रेजल गोल्स होते हैं, एनुअल बजट्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, यू हैव टू मीट दैट. Right. But to me, success is not meeting a year's goal. Success for me has been an outcome. So if I were to define that, what is success? To me, it has always been an outcome. Wow. What I have planned for is doing it right. And then success came in whatever form and shape you can define success. So these are the 5 mantras or points which I believe has helped me in my life. Wow, great. So मैं आपसे नेक्स्ट सवाल यही पूछने वाली थी कि प्रवीण, आपके लिए सक्सेस क्या है? What is success for you? And you have just given the answer that it is not the thing, but it is the outcome of something. करेक्ट. अगर आप इसको थोड़ा केयरफुली साइंटिफिकली भी सोचेंगे, सक्सेस और फेलियर एक आउटकम होता है. राइट. आप कोई चीज करते हो, मान लीजिए मैं बड़ा छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, आप किसी गाड़ी को पुश कर रहे हो, अब वो गाड़ी आगे बढ़ना इज सक्सेस, गाड़ी का आगे नहीं बढ़ना फेलियर है. अब आप उस सक्सेस और फेलियर के लिए प्लान कर सकते हो. जैसे कि धक्का लगाने से पहले आप ये देख सकते हो कि उसकी गाड़ी के पहियों के आगे कोई ईंट तो नहीं रखी हुई है, क्या गाड़ी इंक्लिनेशन पे खड़ी हुई है, या गाड़ी का हैंड ब्रेक तो नहीं खींचा हुआ है. और ये सारी चीजों के देखने के बाद अगर आप धक्का लगाओगे तो चांसेस है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी. लेकिन आप सिर्फ धक्का लगाने लग जाओ विदाउट ये देख के कि क्या मेरे में वो क्षमता है, मेरे में वो कैपेसिटी है गाड़ी को मूव करने का, तो शायद मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी. लेकिन आपने सब कुछ परख लिया, आपने सब कुछ देख लिया कि गाड़ी के पहियों के आगे ईंट नहीं है, हैंड ब्रेक भी नहीं लगा हुआ है, इंक्लिनेशन पे भी नहीं है, लेकिन जैसे आपने धक्के लगाना शुरू किया, आपने सडनली रियलाइज किया कि सामने से कुछ आकर के उस गाड़ी को आगे रुक गया है. तो उसमें आपको शायद सक्सेस ना मिले, लेकिन उससे आप कुछ सीख रहे हो. आप सीख रहे हो कि गाड़ी के आप शायद आधे किलोमीटर या 200 मीटर आगे जाके देखो कोई आगे कोई अड़चन तो नहीं जब मैं गाड़ी को धक्का लगाना शुरू करूं. सो hence success is an outcome, planning is important, and मैं गाड़ी को धक्का क्यों लगाऊं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं किस गाड़ी को धक्का लगाऊं या धक्का लगाऊं भी नहीं लगाऊं. तो आई थिंक अगर जब आप अपने काम में पैशन के साथ इन्वॉल्व होते हो, when your passion becomes your work, nothing like it. But even if your passion is not your work, but you involve or get engaged with your work with passion, right, success failure becomes immaterial. Then it is just an outcome. Wow, great. So Praveen, that's a very very good insight. ये जो गाड़ी वाला portion है, I'm gonna use it, from
I'm going to use this example for sure. By all एक means. एक सवाल ये भी है कि जब हम नॉर्मली लाइफ में चीजें कर रहे होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि मतलब अगर हम नहीं करते तो ज्यादा सक्सेसफुल होते. सो व्हाट आर दोज थिंग यू वांट टू हाईलाइट जिनसे हम बच सकते हैं एंड वी कैन बी वेरी केयरफुल so that we can achieve what we want to achieve? So I think first and foremost, and this is I often advise this to a lot of youngsters who are passing out from college or taking a job, or people are shifting from one job to another. See, you cannot plan for everything. You cannot plan for the fact that वो अगली organization या अगली job कैसी होने वाली है, या or whatever I'm choosing, whether it's going to work for me or not. I think what is very important is एक आपका what I call is that value calibration. Everybody has a value system. Now, if your value system is not in coherence with the environment in which you're going to be working, that will always create conflict in your mind, and that will lead to a situation where sooner or later you would be dissatisfied, you may not be invested into what you're doing. So it is rather important that you figure out that is there a value syndication with your environment. The other aspect could be that when you are looking out for things, when you're trying to do certain things, sometimes you're tempted कि यार ये कर लेते हैं, I'm going to gain out of it. शायद ये प्रोजेक्ट मैं करने से मेरी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मेरे सेल्स टारगेट मीट हो जाएंगे, and then you realize that either me or my organization is not prepared to do that, to deliver that in the given time scale. Now that is a very, very important and decisive moment for you to think about. Simplest thing is saying no to such opportunities. But by ensuring that if you commit to it, you are building enough safety walls around that is very, very important. So safety walls could be built by telling a customer that, look, I'm going to do it. We haven't done it. But if you still wish to do it with us, these are the measures we may want to take, which may or may not go right, but I need your help. Similarly, taking commitment from others that, look, we are going to do something this for the first time, and we are going to do it and learn in this process, but not at the client's cost. So we need to invest extra, be it in the form of new skills, additional hours, additional resources that you may want to bring in. If those things are not happening, you got to be very sure that you continue to do what you're doing, rather than trying to jump into something which is short-term in nature. Absolutely. So great. So this is the last leg of this question, this interview, that what you want to share it with the viewers कि ऐसा वो क्या करें कि वो immediate या फिर long term चीजें plan कर सके success के लिए. I know success is a very different term for different people, but at least वो ये particular चीजें करें so they will get benefit out of it. So as you rightly said, success is very, very subjective in itself, and success के पैमाने मायने change होते हैं year to year with your stage of life, with your age. I mean, so before we actually think about advising somebody about success, I think what is really important is first of all to understand मेरे लिए success है क्या. अगर हम ये क्लियर हो जाए अपने माइंड में कि मेरे लिए सक्सेस शायद एक अगला प्रमोशन पाना ही नहीं है, या मेरा सक्सेस एक अच्छी गाड़ी को पजेस करना नहीं है, या हर साल एक इंक्रीमेंट लेना मेरा अगर मैं उसको रखता हूँ, सो दैट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस हैज टू बी क्लियर इन वंस हेड. बिकॉज आप सडनली लेट्स से आपने एक अपने लिए गोल रखा कि मुझे 20% हाइक मिल जाएगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ, या मुझे 2 साल बाद प्रमोशन मिल जाएगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ. लेकिन शायद कोई आपका कोलीग बेटर जॉब मिल जाती है and he gets a 40% hike, so are you less successful? You're right. So it's a comparison of it. Yes, so success is always relative in people's mind. You could be running at 60 km per hour, somebody could be running at 80 km per hour, so you are relatively slower than that person. Slower than the person. Right? Absolutely. So I'm not saying that it's all relative and it will continue to be what it is, but I think the definition of success is setting smaller goals which you believe is achievable for you. And success, I'm for a minute moving away from professional life. Success could be यार कि मैं एक हैबिट को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करूँ,
So Right. the bad thing would be that I stop doing everything and say कि अब मैं कर रहा हूँ, because that will cause you, anxiety, that will cause you some amount of difficulty. But Yeah. the success को you would be, मैं कल सुबह उठ करके केवल 1/2 किलोमीटर वॉक करूंगा और Yeah. 1/2 किलोमीटर को 600 मीटर 800 मीटर और फिर 1 किलोमीटर पे लेके जाऊंगा. So setting up Wow. small goals, overcoming those goals and Right. succeeding with them will give you more happiness than planning for Right. running a marathon only to Yeah. realize that मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ. Agree. Smaller goals, break down into Smaller goals, Sure. achieve them, keep climbing, keep walking is what my message to people would be for success. Absolutely brilliant. Thank you so much for this amazing insights. I'm sure viewers have got a lot of idea. I have got a lot of idea. That's what I'm gonna do. Thank you so Thank you much. so much. Have a Thanks for your fabulous time. time. Take care. You too. Thank you.